So we are saying that if we say theory of computation in general, the definition of it, it is for a real world problem, we have an abstract machine, okay? Because we don't want to test something, because we want to see firstly whether this problem is solvable or not, whether this problem has an algorithm or not. Can we create algorithm, then thereby we can create a program and all, right? Yes, sir. अगर इसका algorithm ही नहीं बन रहा, इसका program ही नहीं बन रहा, how can we test in computer, right? So scientists have devised, or it was from the early times, like 1940s, Turing machine and all, Alan Turing. They created the mathematical models. These mathematical models, like you write about Turing machine and etc. etc. These are actually nothing but the mathematical models. So what? Mathematical models. These mathematical models act as an abstract machine. They act like a machine, and they test whether your real world problem is computable or not, or maybe it's not computable. And if it is computable, that means it has an algorithm. We can create an algorithm for it, right? To solve this real world problem, we can have an algorithm. Okay? And then how efficient this is, right? So basically it is three things. One is what, then is how, maybe which, firstly which algorithm, and then how. That is what problems you can solve and what problems you can solve. This is the first thing. And which algorithm you will put on to solve those problems, and how efficient. How efficient that algorithm gonna be. So can you tell me the definition of TOC using this diagram and all this background? Theory of computation refers to the creating of the abstract machines which are basically the mathematical models, which in turn let us know if the real world problems are computable or not, and if they are computable, And how efficient they are. computable. And it also provides us certain algorithms to solve those problems, and it also allows us to figure out how efficient our algorithms are in solving that particular problem. Exactly, but it's kind of an essay. We have to compile it into one single definition. Okay, I will help you. Can I have next page here? So we check plus Okay. So I could say right now, get a copy. The theory of computation is that branch of computer science which deal with, okay, it is that branch of computer science which deal with what? Development of Abstract. mathematical models. Mathematical Models. mathematical model किसका होता है? Abstract. Mathematical model of what? Mathematical model of computation. Mathematical model of for computation. Okay? The theory of computation is that branch of computer science which deals with development of mathematical of computation. That is your abstract machine, ना? किस लिए करते हैं? So we can, by this maybe we solve a real world problem, okay, and see how efficient that algorithm is, right? So the theory of computation is that branch of computer science which deals with development of mathematical model of computation, okay, for what? For creation of algorithm, for creation of Algorithm. to solve real world problem, real world
efficiently. I'm just putting one definition. You're going to be careful of another definition, right? Just see the book and see what kind of definitions you have there. This is what we have understood so far, na? That what is this? The theory of computation? It's a branch of It computer is that branch of science. computer science which deals with the development of what? Mathematical models. Mathematical models of Computation. for what? Creation of algorithms to solve real For the world creation problems of efficiently. algorithms to solve real world problems efficiently. Efficient. Even though you can add here. You can add here one model of computation for checking whether there is an algorithm for the problem or not. And then what? Then creating an algorithm for efficient solution of that real world problem. Maybe there is not solution, that is also the part of it. So that part you will add. Right? Okay. Now, in our theory of computation, we have basically three things. We have basically what? First is automata. And language. Second thing is computability. And third is complexity. Okay? ये जो ऑटोमेटा एंड लैंग्वेजेस हैं बेसिकली तीन ही पार्ट्स हैं आपके पूरे इस सब्जेक्ट के. It is automata and languages, number 1. Number 2 it is computability. Number 3 is complexity. ये जो definition हमने बताई ना, ये वही तीन है. जो पहली बात है automata and languages, ये जो mathematical models आपने बनाने हैं ना, उनके बारे में बात होगी कि हम कैसे mathematical model बनाएंगे, ठीक है? उनकी properties क्या होंगी, उनकी definitions क्या होंगी. So what will it deal with? It deals with property and attributes of mathematical models and the mathematical of computation. हमने कहा ना कि हमने क्या कहा? हमने कहा कि हमें चाहिए मैथमेटिकल मॉडल, एब्स्ट्रैक्ट मशीन चाहिए हमें, ठीक है? क्यों? क्योंकि हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं ना, ठीक है? ताकि हम एल्गोरिथम उसका दिए और वो एफिशिएंट बनाए, ठीक? तो पहला काम है वो मैथमेटिकल मॉडल जो आप बनाने जा रहे हो ना, वो ऑटोमेटा लैंग्वेज में आ जाएगा. इट डील्स विद प्रॉपर्टी एंड एट्रीब्यूट्स और डेफिनेशंस. यू कैन से प्रॉपर्टी, एट्रीब्यूट्स एंड डेफिनेशंस. प्रॉपर्टी, एट्रीब्यूट्स एंड definitions of mathematical models of computation. भाई जो abstract machine आपकी है ना, वो वास्तव में है क्या? मेरी जान बताओ. वो वास्तव में mathematical models है ना? जो abstract machine आपकी है वास्तव में mathematical models है, ठीक है ना? अब उन mathematical model को बनाना, उसकी definitions, attributes, उनको create करना, वो आपके आएगा automata language में. जो पहला part आपको टी उसमें पढ़ोगे वो automata language पढ़ोगे, जो mathematical models के बारे में. और दूसरी बात कंप्यूटेबिलिटी की, भाई सॉल्यूशन है कि नहीं. व्हाट विल इट डील विद? इट डील्स विद द कंप्यूटेबिलिटी. इज इट कंप्यूटेबल और नॉट कंप्यूटेबल? व्हाट विल इट डील विद कंप्यूटेबिलिटी? इट डील्स विद कंप्यूटेबल एंड नॉन कंप्यूटेबल प्रॉब्लम्स. भाई आपकी प्रॉब्लम कंप्यूटेबल है नहीं है. एंड व्हाट इज द कॉम्प्लेक्सिटी? कॉम्प्लेक्सिटी विल से कि इस समय कंप्यूटेबल अगर आपको है तो वो कितना एफिशिएंट है ना, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है ऑन द बेस ऑफ इट्स हार्डनेस. सो इट डील्स विद कंप्यूटेबल प्रूफ of problems on the basis of their hardness. On the basis of their hardness.
थोड़ा गड़बड़ लिख रहा हूँ मैं, लेकिन हम समझो। इट डील्स विद कंप्यूटेबल प्रूफ ऑफ प्रॉब्लम्स ऑन द बेस ऑफ देयर हार्डनेस, ठीक है ना। देखिए कुल मिला के जो आपको करना है ना, आपको एक मैथमेटिकल मॉडल बनाना है, जो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का मकसद है। यू हैव टू क्रिएट एन एब्स्ट्रैक्ट मशीन, बिकॉज जो आप प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन ढूंढ रहे हो ना, हमने उसको कंप्यूटर पे नहीं चलाना, ठीक है, क्योंकि अभी पता भी नहीं कि सोल्यूशन है भी कि नहीं है, तो मैं कंप्यूटर पे कैसे चलाऊँ, ठीक है। एंड जैसे अभी आपको आप चाहते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप चाहते हो आप एक चिपसेट डिज़ाइन करो, सर्किट डिज़ाइन करो, आप कंपाइलर डिज़ाइन करो, ठीक है। इन चीज़ों में आपको थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन लगेगा, ठीक। आपको डीएनए मैपिंग करनी है, ठीक। अब आप रियल कंप्यूटर पे नहीं करते हो, आप एक एब्स्ट्रैक्ट मशीन पे करते हो, जो कि मैथमेटिकल मॉडल्स हैं। उनके थ्रू आप देखते हो कि क्या इसका सोल्यूशन निकलेगा कि नहीं। अगर मैं इसको सोल्यूशन निकालूंगा तो वो बेटर है कि नहीं, क्या मुझे और अच्छा सोल्यूशन करना चाहिए कि नहीं। When that is done, then we create an algorithm, then we create a program and then we run it on a computer. हम पहले ही जंप नहीं मारते उसमें, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं थ्योरी के ऊपर, जहाँ मैथमेटिकल मॉडल्स के ऊपर टेस्ट होने वाला। Does it make sense what I'm saying? एक स्टोरी, अब स्टोरी टाइप दिमाग में रखो ना हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। फिर आपको डिफिकल्टी नहीं होगी याद करने में और ये याद रखने में, ठीक। मुझे रिपीट करोगे आप ये चीज क्या है, व्हाट इज टीओसी? शॉर्टकट में क्या आपका रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है, एंड यू वांट टू क्रिएट, यू वांट टू सी वेदर पहले इसका solution है कि नहीं, is it computable or not computable? If it is computable, then what will you do? How efficient it is? No, पहले आप क्या बनाओगे उसका? Algorithm. You will find a solution. हाँ. You have to find a Solution. by creating an algorithm. हाँ. What you are creating an algorithm? What is that? What are you trying to do? You are trying to solve it, the ना? problem. हमें sum of numbers करना है, तो हम एक algorithm लिख रहे हैं. That's actually a solution for that. आ गया solution? अब ये efficient है कि नहीं? ठीक है। तो पहला जो हमने बताया, what is that? Automata and language. Basically तीन चीजें, बेसिकली क्या है? तीन चीजें। एक आपका है लैंग्वेज, दूसरा आपके पास है ऑटोमेटा, और तीसरा आपके पास है ग्रामर, ठीक है। स्टोरी आगे चल रही है ना। अब हम आगे लैंग्वेज पे। जो हम लैंग्वेज या ऑटोमेटा की बात करेंगे, हम किसकी बात करेंगे असल में? वी आर ट्राइंग टू सी द नो, वी आर ट्राइंग टू क्रिएट दैट मैथमेटिकल मॉडल, राइट। जो मैथमेटिकल मॉडल जो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट मशीन है ना, जो आपकी एब्स्ट्रैक्ट मशीन आपने कहा, क्या कहा? ये एक्चुअल मशीन नहीं है बल्कि मैथमेटिकल मॉडल है। अब इसके एट्रीब्यूट्स, इसकी प्रॉपर्टीज, इसकी डेफिनेशंस, इसको कैसे क्रिएट करें ना, इट इज डन बाय दीस गाइस, द लैंग्वेज, ऑटोमेटा, ग्रामर एंड ऑल, राइट। तो अब हम पहला चीज पकड़ रहे हैं, दैट इज व्हाट? लैंग्वेज। ऑटोमेटा एंड लैंग्वेज। ऑटोमेटा एंड जो मैं तीन चीजें कहे, ऑटोमेटा, लैंग्वेजेस, कंप्यूटेबिलिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी, सब्जेक्ट फिनिश, यही तीन चीजें हैं जो पढ़ने हैं पूरे चैप्टर्स। अब हमने पहला पकड़ा, कौन? ऑटोमेटा एंड लैंग्वेजेस। उसमें मैं कह रहा हूँ तीन इंपॉर्टेंट चीजें, एक तो लैंग्वेज, ऑटोमेटा एंड ग्रामर। लैंग्वेज, ऑटोमेटा एंड, अबे लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज शुरू होता है, दो पेन होते हैं ना, पीछे वाला नीचे वाला। ओके, ओके। जो लैंग्वेज हम पहला पकड़ेंगे, कौन पकड़ेंगे? ओके, दिस इज इजी पीजी, राइट। लेमन स्क्यूजी, लाइक माय सन सेज, इजी पीजी लेमन स्क्यूजी। द फर्स्ट थिंग इज द सिंबल। फर्स्ट थिंग इज व्हाट? सिंबल। इसको हम अभी वहां से लिखेंगे, सिंबल क्या है? सिंबल बनाएगा अल्फाबेट। क्या बनाएगा? अल्फाबेट। नोट भी मैंने दिया है, उस पर स्टार्ट यहीं से, ठीक है। अल्फाबेट जब हम मिलाएंगे ना आपस में, जब अल्फाबेट से क्या निकलेगा? स्ट्रिंग। क्या निकलेगा? एंड द कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग इज कॉल्ड द लैंग्वेज। रखा याद? पहला कौन है आपका? सिंबल। सिंबल।
कॉपी बनाएंगे और कल मैं पूछूंगा, देयर विल बी सरप्राइज टेस्ट, यू अंडरस्टैंड? आई विल नॉट टेल यू कि आज टेस्ट है कल टेस्ट है, आई विल कम ऐसे आज टेस्ट है दे दो, सो यू हैव टू प्रिपेयर एंड मेक कॉपी, बी प्रिपेयर, आस्क क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम, यू डोंट अंडरस्टैंड टेल मी अगेन, आई विल टीच यू अगेन, नो प्रॉब्लम, ठीक है? बट एट द एंड ऑफ द डे यू शुड लर्न, देयर इज नो चांस एनी गर्ल हियर विल नॉट लर्न। अच्छा, सिंबल, सिंबल मीन्स कोई भी कैरेक्टर, मैं शॉर्ट लिखता हूँ कैरेक्टर भाई साहब, CHRACTER, कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर आपका कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर वगैरह वो आपकी सिंबल होगी। जैसे आपको सिंबल है A to Z, आपको 0 1, ठीक है, आपके पास प्लस माइनस डिवाइड मॉड्यूलस ऑपरेटर वगैरह वगैरह वो सारी चीजें, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है? यू कुड हैव एनी सिंबल्स ना, अप एरो डाउन एरो व्हाटएवर, एनी सिंबल, any character is a symbol, any character is a symbol. So we can say कि अच्छी मीम symbols इस्तेमाल करें। Then from the symbol we create actually what? Now alphabet is something more technical. Alphabet जो है कौन? Alphabet. Alphabet जो है वो पहला चीज का ये चीज है कि it should be finite. It should be alphabet. It is finite. पहला चीज क्या है? It has to be Finite. finite क्या है वो? जो खत्म होगा, जिसकी कुछ लिमिट्स होंगे, है ना? ऐसा नहीं इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। दूसरा एंड नॉन एम्प्टी, एंड दो चीजें, इट इज अ फाइनाइट एंड नॉन एम्प्टी, ओके, कलेक्शन ऑफ सिंबल्स, collection of denoted by sigma, denoted by Sigma. सिग्मा से दिखाएंगे, ठीक है? एक तो फाइनाइट होना चाहिए और क्या होना चाहिए? नॉन। एग्जाम्पल दूंगा, से फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक अल्फाबेट है 1, 2, 3 डॉट 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 क्या होता है? So. कंटिन्यू, हाँ? सो दिस इज माई सेट। अल्फाबेट सेट की तो बाद में बताइए, तो अल्फाबेट की बात करें ना, हम अल्फाबेट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? तो इज दिस एन अल्फाबेट? नो सर, check out the definition. It is infinite. We are talking about what? Finite. We are talking about finite. So this cannot be the Alphabet. alphabet. If at all it has to be alphabet, it has to be maybe like this: 1, 2, up to 10. No problem with that. If it is up to 10, because it has to be Finite. 5. मेरे पास एक और ये है, सिग्मा से दिखाते हैं, maybe this is, I say x is equal, right? Okay? Yumty. Is this an alphabet? No sir, because it has to be, Non-empty. so this is not an alphabet. So alphabet किससे बनता है? Symbol से, किससे? Symbols. But what is the funda? That it has to be finite. And non-empty. Now I will show you, maybe you can answer me. Capital A to capital Z. Is this an alphabet? Yes, sir. Why? It is finite. It has a limit. It is finite as well as Non-empty. simple, you know? What about that? Z is equal to 0, 1. What do you say about it? Alphabet. Again, correct. ठीक हो गया? Yes, sir. हाँ जी. Why should simple? Why should they sound third, fourth lesson? भाई चूर में जो फोर्थ के बच्चों को आराम समझ आएगा ना, ये कोई रॉकेट साइंस है नहीं। आप बता रहे हो? यस। किधर जाने? बैग लाना है. कौन सा प्रोग्राम हो रहा है आज इंतजाम के? Anyways, now we have what is called as a string. Now we have what? String. We said firstly what symbol?
Second is alphabet. Alphabet is definition. It should be finite and it should be non-empty. Finite and non-empty collection of Symbols. symbols. अब जो string है, string क्या होता है कि we create some finite. It's a part of your alphabet. It's a part of alphabet, right? Which one? A string. A string is a part of alphabet. Okay? Don't write like this. It's a finite part. Say like it's a finite part of an alphabet. आप बाहर जो इस क्लास गोइंग ऑन गो आउट विदाउट परमिशन कैसे अंदर आ गई? पता नहीं क्या है, जैसे ये चल रहा है तो दिमाग ही नहीं, क्लास चल रहा है। मुझे लगा उसको कुछ स्टुपिडिटी की हद है। यहाँ तमीज नाम में शायद पता नहीं किसको डिसिप्लिन किस चीज को बोलते हैं ना। सो वी हैव टू टीच लॉट ऑफ थिंग्स। सो स्ट्रिंग में क्या बोल रही है यार, डिलीट करो इसको। क्या जी यहाँ से अब स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग इज ए फाइनाइट पार्ट ऑफ द अल्फाबेट। इसकी डेफिनेशन नोट से देख लेना। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास सिग्मा लिखा है ना, सिग्मा मैंने दिखाया कि भाई मेरे पास है A to Z, स्मॉल a to Z। नाउ मेरे पास एक स्ट्रिंग मैंने बोल ली ABC। इज a string? Yes. Is a string? Yes, it's an empty string. It's a what? Empty string. It is empty string. Shown by epsilon or lambda. Shown by epsilon or lambda. This is an empty string. This is some, because this string has to be from the alphabet. If this is alphabet, it has to be from that string. ठीक है? Okay, this is my alphabet, right? This is my Alphabet. and I am saying 1, 2, 3. What do you say? Is this string? Yes. No, sir. Because that is right. Because it doesn't belong to the alphabet. फिर आपने बोला था ना अभी जब हमने alphabet देखा था empty नहीं तो हमने epsilon को देखा था। It is string actually. Alphabet cannot be empty. So there is no alphabet. Alphabet is this one, na? Alphabet cannot be empty itself. But string can be empty. String, Can be alphabet. okay? Because string belongs to the alphabet. This string has to belong to the alphabet. Here, this is a string, but not belonging to the alphabet. You getting my point? ठीक है? If it would have been कि by 1, 2, 3 up to 10, for example. Now you could say कि this is the string of this guy. Getting? Now what is the language then? Language is the collection of strings. Collection of, अब हम इस अल्फाबेट से, लेकिन collection of strings belonging to the alphabet. It has to belong to what? It cannot have something else. But it's a collection of all the strings. For example, basically A to Z. Ak string છે में AB. ब्याक string છે में AAB. Right? ब्याक string છે में BC. ब्याक string છે DE. No problem. It can have any many strings, ना? Collection of all these strings, मगर it should belong to the Alphabets. is called the language. Is called the Language. इसको चीज कर पाना.